the height we need to calculate. For calculating this height, if you observe in 3D figure, from 3D here, from this bottom edge to center height has given us to 40. Right? Just create a rectangle. Just create a rectangle here. Go with the REC, enter. Create a rectangle by 48 width and 40 length. Have 40 length. Now create a circle. C, enter. From here to here. Here one more circle you have, right? With the 20 diameter, it means 10 radius. C, enter. Select this midpoint as a center and define radius as to 10. Now go with the trim this unwanted portion. Now what we are doing, select this entire body, make it as to join R. Directly you can go with the press pull, place a cursor inside this one and define the height. What is the height of this one? Actually 12 mm we have. Upwards 12 mm, enter. Now this one we need to rotate and we need to keep at this corner. So what you have to do, select this object, go with the 3R. 3D, rotate, 3R, enter. Here, in which direction you have to rotate, Okay, you want to rotate in this direction, right? Okay, in this direction means it is a rectangle axis. Then you have to select the red circle and click on to 90 degrees. Enter as to 90 degrees. Now select this body, move 3M, enter. Move 3M, enter. Select this quadrant point of the solid body and select end point of this quadrant point. Right now? Now same object we have this side also, right? That time you can go with the 3D mirror also you can do. Okay, instead of 3D mirror, directly you can go with the 2D mirror also. Select mirror, MI, enter. Select this midpoint of this body to midpoint of this body. Directly click on no. Now you can go with the union. Select the body one, these two bodies and press enter. Whatever the edges here you will be find earlier, those edges will be get removed. We will go with the one more figure. Here we have this one. We will create now. Okay, here we have some kind of cuttings also, right? This kind of cuttings how we are going to creating, that one also we will see now. If you observe this figure, from the top, 8 plus 32 plus 8. How much it is total length? 8 plus 32, it is 40 plus 8, 48. Right? This total length of this body is 48. Next, from the center to here, the distance he has given us to 90. If you observe here, from the center point to here, the distance he has given us to 90. This height is 24 and this circle height is 56 we have. Okay, directly go here and create two circles. Circle C, enter. What are the diameters here we have? One is 28 radius, another one is 16 radius we have. One is 28, another one is 16. 28, enter. Next, 16, enter. Next, take a line. From here to here, I am going to creating some length of line. Later on, select this line. Offset, upside and downwards, 3 mm. Offset, 3 mm upwards, 3 mm downwards. Now go with the trim. We create the shape. Now go with the L, enter. Create a line with the 90 distance. With the 90 distance, create a line. Now go with the L, enter. Total length is 48, right? Then I am going to take here 24 upwards and 24 downwards. 24 upwards and 24 downwards. Now select this line, go with the copy, base point and keep here and here. Next, go with the trim, or better to go with the extreme also, no issues. Here I am going to do removing this unwanted lines. This unwanted lines from here. Later on, this height is 24 we have, this height is 56 we have.
Go with the principal directly and place a cursor inside and define the height as to 24 and place a cursor in this one and define the height as to 56. Later on, here we have a cutting line. Here, cutting portion we have. Okay, that kind of cutting portion we will create. Directly, you can create a circle. Directly, you can create a circle with the 16 radius. Okay, and length of this cylinder is 40. Cylinder command C by L enter. We know select the center point. Radius is 16. Enter. Axis and A enter and go with this axis direction in 40 length enter. Okay. Now select the cylinder. Move. Okay. You will find the center point mark and here you will find the midpoint. Next, go with the subtract S U V enter. Select the major body. Enter. Which body you want to move? Select that body. Press enter. Now these two are separate bodies, right? Now go with the union. Select the body 1 and body 2. Press enter. Now click. This is the single shape. I would like to show one more figure. Some tough kind of shape I would like to show you. Shall we create this one? Hussein Basha. जी सर बनाइए. Yeah. If you observe here, there is a rectangular box, right? 80 width from here to here. 80 plus 80 plus 20 plus 20 plus 80. 20 plus 20 plus 80. It is 120. Here, this is the 80. First, I'm going to creating a box. Directly you can go with the box command. BOX enter. Create a box with the 80 tab 120 enter. And what is the height of that box one actually? What is the height of this one? 15, right? Define the 15 height. Right? Next, here we have a 80 width, 20 length, 80 width and height from here to here. What is the height, total height? What is the total height here? If you observe here from here to here, you will be finding the 50 distance. After that, here you have a fillet radius. Okay, just add the fillet radius to that 50, then you will get the 90. 50 plus 40, you will get the 90, right? Then go with the 1 second box, BOX enter, select this corner point. Okay, drag here, go with the 20 mm. Okay, 20 tab. This downwards 90 we are going to taking, right? Next this length mark 80. I'm going to selecting this two. I'm going to moving upwards. Some upwards I haven't moved. Now here you have a plate, right? Here you have a plate with the 40 radius. Then here you will find the edge fillet option mark EDGE fillet enter. On which edge you have, select the first edge and other edge. First edge and other edge. EDGE fillet. Select first edge and second edge. Okay, radius R enter. 40 radius, right? 40 enter. Enter and enter. Now select this body, mirror MI enter. Here you will find the button midpoint. Here also you will find the midpoint. Click on no. Now go with the union one. Select this body 1 and body 2 and body 3. Press enter.
Now here you have a circular shape, right? Directly you can create a circle. See, enter. Here we want to change the direction. Here it is not possible. Then directly you can create a cylinder. Cylinder, CYL, enter. Okay. What is the radius of this hole actually? 32 diameter. It means 16. And what is the length from here to here? It is 120. 32 diameter means 16 radius, enter. Axis and A, enter. Okay, length 120, enter. Now select this body mark, move, select this center point, and here also you will find the center point, right? Keep over here. Now go with the subtract SUV, enter. Select the solid body, major body, enter. Select which body you want to remove, press enter. Next, at top also you have a circle, right? Then directly you can go with the cylinder CYL, enter. Select this center point, define the radius or diameter. This diameter is 60, height how much we have? 20. Height 20 we have. See, diameter, 180 diameter we have, another 60 diameter we have, internal we have 30 diameter. So first of all, here we are going to creating a circle with the 80 diameter means 40 radius, height 20. On this surface, we are going to creating a circle. See, enter. Create a circle with the 30 radius. Okay, once again you have to create a circle. Once again, you have to create a circle with the 15 radius. 15 radius. Now go with the push pull and select this circle downwards. We are going to taking 20 mm. Now select this circle, drag completely downwards. Downwards. If you observe here, the circle will be present like this. Go with the push pull, select and drag downwards. Okay, now directly go with the union, select this body and this body, press enter. Now you will get the object like this. Likewise, you have to create the 3D elements from. If you want to check that different views of this component, then directly you can go with the viewport. For example, here I am going to keep in surface. Okay, I would like to see the different views of this component. Then go with the viewport, VIEW port, enter. Vertical, okay. I want to observe this body, select, I am going to moving this one, particularly some distance. Now, click over here and zoom here. I would like to see the front view. Okay, I would like to observe only this part one. So what I am doing, I am just selecting and moving this part. I would like to change this one into shaded with the edges. See here, whatever the we have. सुबह 10 बजे ज्वाइन करो बोलता, अब 10 बजे शायद सबको, right Sajid? Right? If I am going to observing the views of this component, see, how the top view looks like. Same top view also we are going to get it. If I want to observe the front view, see the front view and see the
left side view or right side view? How it's look like? Whatever the views we have been created beta, same views by following that one, we are going to creating like it shapes. Okay, this is our 3D. Now we will convert our plan into a 3D. Whatever the plan we have been created, open that plan. Open that plan. Now we will complete that plan into a 3D. This is our plan, right? Now we are going to converting our plan into a 3D. Select this base point and we are going to keep it here. ये वाला प्लान को क्या करें बेटा हम 3D में कन्वर्ट करेंगे. Okay, here I am going to taking the height of the wall is 10 feet. Here I am going to taking the height of the wall is 10 feet. Then you know the box command, right? Then directly you can go with the box VOX. If you take the principal command, it will take a lot of time to convert these objects into 3D. Click over here and define the height as to 10 feet. Enter. Better to convert this one into isometric and then click over here and go with the shaded with edges. See here, box, UX center, select this first corner, select this corner too. After this corner we are going to selecting and defining the height as to 10 feet, enter. From this corner to this corner, height 10 feet. Select from this corner to this corner, height 10 feet. Select from this corner to this corner, height 10 feet. From this corner to this corner, we are going to select the height as to 10 feet. Okay. Box from here to here, height 10 feet. Corner 1, corner 2, height 10 feet. Okay, we want to rotate. Directly you can click over here and go with the change the direction. Box from this corner to this corner, height 10 feet. Likewise, you have to select the box and create this object mask. Directly, you can go with the principal also. Okay, what happens by using the principal? If we have a small regions mask, that time we can easily convert. If we have larger portions, that time it will take a lot of time to convert. Here, if I place a cursor here itself, slowly place a cursor here, move upwards 10 feet. Either you can go with the principal. अंते का अब ऐसा स्टार्ट होते हुए चले जाता है प्रेसफुल यूज करें तो फिर से एस्केप कर लेना आराम से फिर से प्रेसफुल ले लेना आराम से कर्सर रख दो हाइट 10 फीट स्लोली करो बेटा दौड़ते हुए नको स्लोली कर दी तो आराम से आता ओके प्रेसफुल smoothly place a cursor inside this closure boundary. If it is selecting the blue region, then directly you can enter the height. If it is not selecting the closing boundary, then you have to go with the box command directly. See, it is not taking right. Now, simply change the direction. Not isometric, we are going to taking here and zoom over here.
Now go with the principle once again. देखो अब ले ले रहा राइट 10 feet. अब हम ले ले रहे 10 feet enter. Escape once. Okay. Go and place a cursor inside. Is it occupying? No, right? Now place a cursor here. It is also not. And here place a cursor. Is it occupying? Here also not, right? So simply go with the escape. Now go with once again. Box BOX enter. Select the first corner point and second corner point. Height as to 10 feet. From this corner point to this corner point, height 10 feet. Next. From this corner point to this corner point, height 10 feet. From this corner to this corner 10 feet. Shift scroll की होल कर दे तो आपको रोटेट में करना बेटा. Okay, height 10 feet. ऐसे छोटे-छोटे रीजन्स है. अगर सेलेक्ट करा डायरेक्टली यू कैन डिफाइन 10 feet. 10 feet. प्लेस करे कर्सर सेलेक्ट करा 10 feet. और कहाँ पे है थोड़ा ध्यान से देख लो. और है छोटे-छोटे वॉल्स. I think we have been completed. Now what I am doing, अभी जो भी वॉल्स जितने भी हम वॉल्स बनाए बेटा पहले इन सबको जोड़ लो, सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर लो. तो हम क्या करें यूनियन के अंदर चले गए. वॉल्स जो भी हम सेपरेट सेपरेट क्लिक करें वो पूरे वॉल्स को सेलेक्ट करें. प्रेस एंटर कर लो. नाउ पूरे के पूरे वॉल सिंगल टाइप में हो जाते हैं. और जहां जहां पर भी आपके ऐसे सेपरेट सेपरेट एजेस आ रहे थे यहाँ पे सेपरेट सेपरेट एजेस के जैसा वो पूरे भी निकल जाके सिंगल बॉडी में आ जाते हैं. नेक्स्ट अब इस पर हम क्या करें, यहाँ पे विंडोज है राइट. विंडोज ओपनिंग्स को क्रिएट कर ले रहे हैं और डोर ओपनिंग्स जो भी है वो रख दे रहे हैं. जहां जहां पे विंडोज है सेम बॉक्स BOX एंटर करो और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेकंड कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करो बेटा. हाइट आ जाके 3 फीट की ले लो. स्टिल हाइट 3 फीट है ना. बॉक्स फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेलेक्ट द सेकंड कॉर्नर पॉइंट. हाइट 3 फीट. शिफ्ट एंड रोटेट. बॉक्स फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेकंड कॉर्नर पॉइंट. हाइट 3 फीट. फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेकंड कॉर्नर पॉइंट. हाइट 3 फीट. First corner point, second corner point, height 3 feet. ये 3D करते वक्त बेटा आपका लैपटॉप या सिस्टम जो भी है कंप्लीटली फुल हीट हो जाता है. Okay, Windows के हम blocks क्लिक कर रहे हैं. Now select all the blocks. Select all the blocks. Go with the copy बेटा. कॉपी सेव एंटर. बेस पॉइंट सेलेक्ट करके अपवर्ड्स हम क्या करें विंडो हाइट 4 फीट है समझो. ओके देन यू कैन गो विद 7 फीट हाइट. यू विल क्रिएट द ब्लॉक्स.
select all the window blocks. Okay, copy CO, enter, select the base point. Okay, move upwards to 7 feet. ओके, यहाँ तक ओके बेटा। और यहाँ पे हमारा छोटा सा एलिमेंट छुड़ गया, प्रेस पुल, यहाँ पे कर्सर रखिए, हाइट ऑफ 10 फीट। नेक्स्ट फिर से यूनियन एक साथ ले लिए, ए वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स ले लिए। अब देखो यहाँ पे लाइंस डबल लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये लाइंस पूरे चले आके सिंगल वॉल के डिजाइन की तरफ में आते हैं। द सेंटर सी पूरे चले आके लाइंस यहाँ पे आपको विंडो के ब्लॉक के सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको एक वेंटिलेटर है बेटा। वेंटिलेटर का हाइट आपको जो भी ले रहे हैं, बॉक्स व्यू एक सेंटर, ये वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर तक हम हाइट ले रहे हैं। इससे यही टिपल था, थोड़ा स्लोली बॉक्स VOX एंटर, ये वाला कॉर्नर पॉइंट और ये वाला कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करें, हाइट 6 फीट ले लो। यहाँ पे आपको वेंटिलेटर आ जाता है। नेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ बेटा फिर से बॉक्स VOX एंटर, यहाँ से ये वाला कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करें, डाउनवर्ड्स मूव करना है, VOX एंटर, कॉर्नर पॉइंट से इसके कॉर्नर पॉइंट को यहाँ से ये वाला कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करना है बेटा, डाउनवर्ड्स कितना 1 फीट की विंडो हाइट छोड़ दिए, समझो रिमेनिंग था 3 फीट, ये दो सेलेक्ट कर दिए। शिफ्ट के साथ थोड़ा रोटेट करें। नाउ सेलेक्ट दिस टू ऑब्जेक्ट्स, कॉपी ये वाले पॉइंट यहाँ तक। नाउ हम क्या करें, यूनियन सेलेक्ट दिस एंटायर वॉल्स, और ये जो बॉक्सेस इसको सेलेक्ट करने का बार बार यूनियन करने का रीजन ये है कि मैं अगर कुछ भी छूट गया बेटा फिर से हम देख ले सकते हैं और वहाँ पे क्या गलती है आराम से मालूम हो सकते हैं। आगे पीछे बैठे तो वहाँ पे फिर से सेपरेट लाइन के जैसा भी ट्रीट होता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे डोर ओपनिंग्स है, और द डोर ओपनिंग्स में सेम बॉक्स सेंटर, ये वाला कॉर्नर पॉइंट से ये वाला कॉर्नर पॉइंट तक ले लिए, हाइट ऑफ 3 फीट। From here to here, height 3 feet. From here to here, height of 3 feet. Height of 3 feet. From here to here, height of 3 feet. बॉक्स ये वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर तक हाइट ऑफ 3 फीट। यहाँ पे भी है बेटा, हम यहाँ पे एक छोटी सी दीवार में सोइए देखो 3 फीट। तो इसको क्या करें, हम फिर से प्रेस टूल के पास लेके गए, तो प्रेस टूल प्रिंसिपल सेलेक्ट 10 फीट हाइट ले लिया है। हाँ बेटा यूनियन के साथ चले जाओ, ये वाल सेलेक्ट करके एंटर करो। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, जो भी बॉक्सेस हम क्लिक करें
एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, मूव कर लेना है 3 पिक्चर। यहाँ पे भी मिस हो गया देखो, बॉक्स BOX एंटर, कॉर्नर 2, ये वाला कॉर्नर हाइट 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक हाइट 3 फीट। Now select here, बोलो बेटा, hand raise क्यों कर सका? Okay, directly select the blue axis, don't go with the M में enter भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 7 feet की height move कर दी है। Next, once again go with the union, now select these walls, likewise we have to create the model into a 3D map. Next इसके ऊपर स्लैब डालना, नेक्स्ट बेसमेंट डालना, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कंपाउंड वॉल्स है, राइट, स्टेयरकेसेस है, और यहाँ पे भी आपके स्टेयरकेसेस है, ये पूरे मंडे या ट्यूसडे के दिन हम देख लेंगे। ओके, हेलो हुसैन जी सर। अब जो भी यहाँ तक कंप्लीट करें यहाँ तक, और ये जो प्लान है हमारा इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, लाइक कंप्लीट स्लैब डाल के इसके ऊपर हम यहाँ पे जैसा एलिवेशन ले लिए 2 फ्लोर या 3 फ्लोर, राइट। यहाँ पे तो हम एलिवेशन ले लिए कि 3 फ्लोर का, राइट। हाँ, 3 फ्लोर का एलिवेशन है, सेम उसी टाइप में 3 फ्लोर की बिल्डिंग हम लाके रखेंगे यहाँ पे, 3 फ्लोर खड़ा कर देंगे यहाँ पे, और 2 फ्लोर बनाएंगे टेरेस। ओके क्या? जी सर। जैसा यहाँ पे दिख रहा आपको, ओके, ये वाला एलिवेशन अगर हम 3D क्रिएट करने के बाद सेम एलिवेशन आ रहा नहीं, वो भी चेक करना है। Is it okay? On next class, in coming classes, we are going to defining each and every detail like elevations what we define, same views we have to create, like यहाँ पे हम जस्ट वॉल्स को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जितने फ्लोर्स आप लेना चाह रहे हैं उतने फ्लोर्स, यहाँ पे पैरापेट वॉल नहीं, रूफ नहीं, और यहाँ पे स्टेयर के पास एलिवेशंस नहीं, और यहाँ पे कंपाउंड वॉल नहीं, गेट नहीं, तो पूरे हम रखते हुए कंप्लीट करेंगे इन कमिंग क्लास। आपको और 3 क्लासेस ले लिए तो कंप्लीट हो जाता बेटा, डोंट मिस, लाइक ट्यूसडे के दिन ज्वाइन हो जाओ। ओके सर। ओके, बाय। जो मिस हो गए बेटा उन्होंने मेरे को टेलीग्राम में हाई बोल के रखे, तो मैं ये वाला वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ आज की क्लास का, सिर्फ आज की क्लास का। कॉन्टेस्ट करें, टेलीग्राम में हाई बोल के रखो, उनको मैं शेयर करूंगा। टेलीग्राम पे भेजना क्या मैसेज? हाँ बेटा, ठीक है। टेलीग्राम में आपका है, आपके नाम पे है? टेलीग्राम में मेरा नंबर है, राइट, व्हाट्सएप पे जैसा 7013 राइट, तो टेलीग्राम में दिखता है। ओके सर, राइट, सेंड करो, मैं शेयर करूंगा। ओके, बाय।